On behalf of Columbia Global Centers Mumbai, I welcome you to the fourth episode of our Writing Indian Stories series, which investigates the form and process of writing by the Columbia University community outside of traditional academic texts. Our event today, Writing from the Margins, commemorates Dalit History Month and the birth anniversary of Columbia alumnus Dr. Bhimra Ramji Ambedkar. It also marks 20 years of Khabar Lahariya, the country's only rural, women-led, award-winning media collective, which is also the subject of the recently Oscar-nominated documentary, Writing with Fire. Once the proud publisher of a chain of local language newspapers in India's marginalized and underserved Bundelkhand region, Khabar Lahariya runs now as a digital-only rural news channel with 557,000 YouTube subscribers and an average of 10 million views every month. Practicing an unflinching feminist perspective with an all-women team of over 30 reporters and stringers comprising Dalit, tribal, Muslim, OBC, and also upper caste women, Khabar Lahariya's rural journalism follows the everyday stories of everyday people in locales that are left out of the spotlight of mainstream media. Khabar Lahariya has been hailed as a powerful local watchdog and an instrument for enforcing robust grassroots governance and accountability using information as a tool for empowerment. I am delighted to be in conversation with Kavita Devi and Farah Naqvi as they dwell on Khabar Lahariya's journey and significance. वास्तव में एक अखबार की जरूरत है। गांव में किसी भी तरह की पढ़ने की सामग्री नहीं जाती थी, किसी भी तरह की क्या ना तो कोई अखबार और दूर संचार के माध्यम नहीं था। तो हमें लगा कि गांव के लोग भी तो इस लोकतंत्र के हिस्सा हैं और खास करके जो गांव की आवाज है, जो गांव के मुद्दे हैं, वो अन्य मीडिया में नहीं आ पाते थे। तो हमें लगा कि हाँ, एक अखबार की तो जरूरत है इस इलाके में और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो हमने खबर लहरिया की नींव 2002 में रखी और उसके साथ में कई उद्देश्य थे। एक तो था कि गांव की न्यूज़ें हम दुनिया तक पहुंचाए और जो भी हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाजें, जल, जंगल, जमीन, पानी, विकास के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, ये सारी चीजों में बात नहीं हो रही थी। और जो दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह की योजनाएं आ रही हैं, सरकार क्या बोल रही है, क्या निकाल रही है, उसको पढ़ने का और समझने का गांव वालों का भी उतना ही अधिकार है। तो ऐसा होता था कि जो गांव के जो मर्द थे या जो उच्च जाति के लोग थे, जिनकी पहुंच शहरों तक थी, जो रोज आना जाना था, वो तो कहीं ना कहीं अखबार पढ़ लेते थे। लेकिन एक तबका जो हाशिए पर रहने वाले तबका के लोग हैं, उनकी ना तो आवाजें आती थी, ना ही वो बाहरी दुनिया से जान पाते थे। तीसरा ये था कि पत्रकारिता का जो क्षेत्र है अपने आप में बहुत बड़ा हुआ भी है और ये चुनौती हमारे लिए रही है कि महिलाएं पत्रकार नहीं बन सकती हैं। ये महिलाओं का क्षेत्र नहीं है, महिलाएं कोमल होती हैं और मैं हर मंच में आई थिंक ये चीज बोलते बोलते थक गई हूँ अब कि ये जो हमको चुनौतियां रही है कि ये महिलाओं का क्षेत्र नहीं, उनको नर्स होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, एएनएम होना चाहिए, जहाँ पर वो एक जो बांधा हुआ दायरा है कि आप 10 से 5 ड्यूटी करके आप बच्चों के बीच में रहकर फिर आप अपने घर जा सकते हो। तो पत्रकारिता के समुद्र में कैसे महिलाएं हो सकती हैं? और ऐसी महिलाएं जो हाशिए पर रहने वाली हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं या जो उच्च जाति की भी महिलाएं हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, तो हमें लगा कि महिलाएं उस क्षेत्र में आ सकती हैं। और इन सारे उद्देश्यों को लेकर के हमने खबर लहरिया की शुरुआत की और उसमें से मैं भी जुड़ी। तो आई थिंक मेरा तो बहुत लंबा सफर है। That being a feminist paper, number one, it's not just that there are only women, but there is a reason there are only women. There is a structural location that this diverse cohort of women bring to their job. It is a lens, it is an eye that they bring to their job. That's one. But this is not a very crude kind of feminist paradigm of, we will only do women's stories, and it's not men versus women.
and we will only do what are very narrowly defined as women's stories. So, violence against women, domestic violence, sexual violence, that's what, you imagine that's kind of what Khabar Lahariya ought to be doing. What Khabar Lahariya will do is a corrective to the lacunae, certainly in the mainstream media, which is that if there are egregious stories of sexual assault and domestic assault, that are simply not finding space in local media because there are powerful interests at work. That is the what Khabar Lahariya has to pierce through and say, no, this belongs in the airwaves. It needs to be told because there is such an asymmetry of power in this crime. So, to function as a corrective, and all the silences around what women are suffering need to be broken. That's one. But look, Khabar Lahariya equally does, like you said, what are women's issues? So there are a set of practical gender needs that overlap with the needs of any community. These are needs for schools for your children, water accessible, so you don't have to walk miles to collect that water, which always falls to the women. Roads so that you can access healthcare, primary health. All of these are very practical gender needs as well. Then there are strategic gender needs, which is how do you question and change the structures of power that locate women differently from men. So Khabar Lahariya will do all of the above. शोर शुरू से रहा है, शोर के दायरे बढ़ते गए हैं। जब प्रिंट मीडिया हमने शुरू किया तब भी शोर था, अन्य अखबार थे, मेन स्ट्रीम मीडिया थी, लेकिन वो आवाजें नहीं थी जो गांव की मेन आवाजें होना चाहिए, वो आवाजें नहीं आ रही थी मीडिया में। और अगर मैं अभी की बात करूं कि हम कैसे जगह बना पाते हैं जहां पर इतनी सारी मीडिया आ गई है, जहां पर मीडिया की भरमार है, तो हाँ, मैं मानती हूँ कि मीडिया भी एक तरह से बीज की तरह बो गया। इस भीड़ में अपने उद्देश्यों को कायम रखना, इन उद्देश्यों को 20 साल तक कायम रखते हुए ले जाना और डिजिटल माध्यम में आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और है। और जो मैं मानती हूँ कि आई थिंक हम जब प्रिंट से डिजिटल हुए तो हमारे लिए भी ये एक तरह की दूसरी क्रांति थी। हमारे उद्देश्य वही थे, खबरें वही थे, लेकिन हमारे लिए चुनौती थी कि क्या हम डिजिटल मीडिया को स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जहां पर आप वेबसाइट की बात करें कि जहां पर इतनी सारी वेबसाइट है जो लोग पढ़ते हैं, उनको तुरंत में खबरें मिल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल खबरें मिल जाती हैं, लेकिन खबरों में जो गहराई होती है, जो विविधता होती है, जो जमीन के मुद्दे होते हैं, शायद कहीं ना कहीं वो खबर लहरिया में जो केंद्र है, जो कामयाबी हमको हासिल हुई है कि अभी की अगर मैं बात कहूँ कि नारीवादी सोच को लेके महिलाओं के बारे में कितने लोग रिपोर्टिंग करते हैं कि महिलाएं जब चुनाव आते हैं वो क्या चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं, वो कैसे नेता चुनना चाहते हैं, क्या उनके अंदर भी कोई सवाल है, क्या हम जानना चाहते हैं कि गांव में जो आदिवासी एक महिला है वो भी अपना मुद्दा अपने विधायक को बताना चाहती। तो हमें समझ में आया कि एक नारीवादी मीडिया होने क्या मतलब है, और फिर उन आवाजों को हम अपने वेबसाइट में पब्लिश करते हैं ताकि वो आवाजें जो अन्य वेबसाइट को भी पढ़ते हैं, उस भीड़ भाड़ की जगह में जो गांव की जरूरी आवाज है, जो महिलाओं की जरूरी आवाज है, आप उनको नहीं छोड़ सकते हो। आपको उनके बारे में बात करना होगा, आपको उनके बारे में लिखना होगा, और हम है उसके लिए, हम लाते हैं ऐसी आवाज को, हम अपने वेबसाइट में उसकी जगह देते हैं और लोग हमको इसीलिए पसंद भी करते हैं। I do want to add to something that you asked, Kavita, and about sustainability and how to survive in the digital age and so on. And look, Kavita is doing the Kavita show now, but you have to, the difference between the huppany tuppeny armchair opinion that passes for analysis in a lot of mainstream media versus a Kavita who now does the Kavita show after having really earned her chops in the field as a hardcore, grounded reporter.
So, the Khabar Lahariya, the news that they bring, even in this saturated digital age, is they bring a professional journalism that is grounded in privileging reporting. And that is the strength that Khabar Lahariya's digital platform brings. That is what it's authentic. There is an authenticity to the voices that cannot be challenged. Don't do anything unless you have the passion and conviction for it. That's absolutely, that's what's driven this amazing, what was once an experiment, this far. That's what allows Kavita to overcome the most incredible odds that women in that part of the world have to overcome. So unless you're truly passionate about something, don't do it. Unless you're really convinced that what you're doing is challenging the structures of society and power in some way, don't do it. But if you do decide to do journalism or local media, do reporting, do not do armchair analysis. Armchair analysis is very welcome. Academic writing is very welcome. But as a journalist, you've got to first, it's the funnest place to be. It's the most energizing. It is the most authentic space to be. मुझे लगता है क्या बोले कि सोच और नजरिया जो है वो बहुत स्पष्ट होना चाहता है, और आप किसके लिए लिख रहे हैं, आप किसके लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बहुत जरूरी इस चीज को समझना। तो जो आवाजें हैं जिनको रियल में समाज को आईना दिखाना है या उन पर बात करना है, मुझे लगता है उन आवाजों पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और रिपोर्टिंग में हर पहलू होता है, आपको जांच के, परख करके, तहकीकात करके, हर पक्ष से बात करके ही आप कोई रिपोर्ट को दें। बहुत सारी चीजें फेक चलती हैं, उन फेक को जांचना, परखना, क्या सही है क्या गलत है, इन चीजों को तभी हमें लगता है कि आगे उनको करना चाहिए। और फिर से कि रियल में जिन आवाजों पर बात नहीं होती है, क्या उन पर बात हो सकती है? आने वाली जो पीढ़ी है वो किस तरह का देश बनाना चाहती है, किस तरह के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही एक ऐसा आईना है जो चीजों को बदलने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है।